वेलकम टू क्वालिटांस इंडिया। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी रिसेंटली हमने एक अपने फॉरेन मैन्युफैक्चरर से अभी एक हमने प्रेजेंटेशन शेयर करी थी, तो आई थिंक कि मुझे यूट्यूब पे भी डालना चाहिए, एज मेरा चैनल क्वालिटांस इंडिया ऑलरेडी काफ़ी टाइम से है यूट्यूब पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे BIS FMCS सर्टिफिकेशन for IS 17875 2022 with DMV tubes. Basically, DMV tubes is our client. So basically, this is a presentation prepared by Qualitans India or us. So what is the agenda? Agenda is all about what is Qualitans India, what they are doing, overview of BIS and FMCS, applicability and eligibility, IS 17875 का हम थोड़ा बहुत टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे एज पर द स्टैंडर्ड। BI सर्टिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके का है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फी और टाइमलाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। और Q&A का सेक्शन जो है हम कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज क्वालिटांस इंडिया। तो बेसिकली क्वालिटांस जो है, क्वालिटांस इंडिया मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है बिकॉज क्वालिटांस एक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस। जनरली कॉम्पिटेंस के अंदर ई आता है, बट जब मैं ये ब्रांड का नाम रहा तो मेरे को क्वालिटांस एकदम अच्छा वर्ड लगा मेरे फर्म के लिए। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम बेसिकली मेरा स्लोगन भी है, वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटांस इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर को regarding the compliances for conformity assessment in different segments. It may be hallmarking, it may be BIS, it may be NABL. There are so many regulators in India. So हम basically consultancy provide करते हैं, and you can see all the details कि थाउजेंड प्रोडक्ट्स BIS में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो उन पे हम लोग जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। Basically, what is BIS? BIS is a national standard body established in India under BIS Act 2016 for the harmonization of development of activities of standardization, marking and quality certification for for marking and quality certification और इकोनॉमिक लेवल पे ये वर्क करता है। एंड so basically what are the types of services offered by the BIS? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करता है BIS, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर है ISO 17065 के तहत। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम यानी CRS इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। FMCS जिस पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम, हॉल मार्किंग स्कीम, लेबोरेटरी स्कीम, लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम, लेबोरेटरी सर्विसेज। इंडियन स्टैंडर्ड्स को सेल भी करता है, इन्होंने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है BSBH करके। कंज्यूमर अफेयर की एक्टिविटीज में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी करता है, लाइक यू कैन से काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी रन करता है विद इन द कंट्री। ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, नेट से पूरा एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, पूरा एक इंस्टीट्यूट है, नोएडा बेस्ड है, और काफ़ी सारी ब्रांचेस बनी हैं इसकी। और सेम चीज़ हम बात करेंगे, नेशनल लेवल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग कराता है। फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम बेसिकली FMCS है, 2016 के अंडर ये रेगुलेशन। अंडर दिस स्कीम फॉरेन मैन्युफैक्चर कैन टेक अ BIS license and sell their goods in India. So basically this is a mandatory for the foreign manufacturer of the product is under the mandatory version in BIS. So the manufacturer has to take the BIS license to sell their products in India. Products or goods you can say in India. So can apply. Basically, uh,
The manufacturer which have their factory location outside India apply under FMCS. They shall ensure the conformity of product to applicable Indian standard IS. मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी उसके पास होना चाहिए, इक्विपमेंट फैसिलिटी होना चाहिए कंप्लीट टेस्टिंग का, और कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर जो भी टेस्टिंग पर्सन हो उनको ही कुछ नहीं आता तो हाउ विल दे मेंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बीआईएस स्पेसिफिकेशन. सो ये बहुत देखने का इसमें है. तो बेसिकली कॉम्पिटेंट पर्सनल होने चाहिए, और स्कीम इनकी जो है स्कीम इन टेस्टिंग और इंस्पेक्शन एसआईटी जिसे बोलते हैं, मार्किंग फी एक्सेप्ट करें, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है. और बेसिकली इसमें एक कंडीशन है कि इफ़ कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसकी 2-3 यूनिट्स लगी हुई हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसको बीआईएस लेना पड़ेगा. इंडिया में भी ये सेम रूल एप्लीकेबल है फॉर डोमेस्टिक यूजर्स. तो अभी हम बात करेंगे एआईआर, ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. बेसिकली इसमें फॉर एग्जांपल if a manufacturer who is producing the goods or manufacturing the goods outside India, so there is a person, Indian person, who represent the company or the manufacturing unit to BIS. So basically एक इंडियन रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है अगर इन केस कोई ब्रांच है उनका इंडिया में, तो एम्प्लॉय जो है उस ब्रांच का पर्टिकुलर उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं. अगर इन केस फॉरेन मैन्युफैक्चरर का कोई ऑफिस ही नहीं है तो वो लीगली एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं. और एआईआर का कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व, लेबोरेटरीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो सैंपल आगे चल के थर्ड पार्टी लेबोरेटरी में जाएंगे जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच करेगा, और नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. एआईआर एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बाय क्वालिफिकेशन, एंड और एआईआर जो है डिक्लेयर कंसर्न दैट दे आर responsible, that the person is responsible for compliance of the BIS Act and regulation, और इसका नेम जो है वो एंडोर्स किया जाएगा. वो मैन्युफैक्चरर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यार की, बेसिकली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, कई इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी चाहिए उसे, जो भी सैम्पल मार्केट से ड्रॉ होगा तो कंसाइनमेंट का, तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यार. तो IS 17875 2022 की अगर हम बात करें, ये एक स्टैंडर्ड है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप्स. सीमलेस स्टेनलेस स्टील. सो वंस अगेन ये वीडियो है 17875 IS stainless steel seamless pipes and tubes for general service. So we will know about the more details what the standard have. So standard का जो scope है, this standard covers the requirement for seamless stainless steel pipes and tubes for general service only. This standard doesn't specify a requirement of seamless stainless pipe tubes intended for distinct purpose which are covered by separate standards. So there are separate Indian standard for the distincted use or distincted purpose stainless steel pipes and tubes. So these are the grades cover in this Indian standard: ferritic, martensitic, diplex, austentic. These are the grades which are covered in the standard. What type of requirements
Testing requirement, basically these are the chemical requirements, ladle analysis, product analysis. Then there is a mechanical requirement, tensile requirement, transverse tension test, hardness, flaring test, flattening test, grain size, leak tightness test, corrosion test, workmanship, finish and appearance, dimension and tolerance. So these are the testing requirements. So that means manufacturer has the complete facility to test their product as per the standard requirement. How the process goes on? Step number one, documents that has to be prepared. Application will be submitted to the BIS. The scrutiny of the documents or application will be done by the BIS officer. Then they post the discrepancies if your application has. Then you will resolve the queries. Then finally they will accept your application. Preparation for audit will be started, just the application accepted. So BIS will nominate the auditor for the assessment or audit. So they will brief about the BIS auditor who is coming to your site to witness or to do the audit of your premises. So basically, how to plan the audit. Basically, how to plan the all the information as per the audit requirement. So BIS officer will conduct the audit and draw the sample for the testing. Then the test sample will goes to the BIS recognized Indian laboratory. The scrutiny of audit report and testing reports done by the BIS, submission of fee, BIS and laboratory fee, testing fee. Then the grant of license will be done from the BIS part. What type of documents are required? Application form has to be filled, manufacturer machinery details, test equipment details, calibration, QC person detail, raw material detail, plant layout and etc. Validity. Initially, the license is granted for 1 year. Then you can renew a license up to minimum 1 year and maximum 5 years. The renewal application made if the renewal application is made after the validity of the license. So the applicant shall be accompanied by the late fee of rupees 5,000. This is the fee structure we will discuss later on. This is the action plan. So basically this type of certification will take at least 5 months to be licensed to be granted. This is the process, complete process. You can check. Basically you can also take the screenshot, just ignore the serial number one and you can go on. What are the benefits of license? Legal market access will be there. Government project eligibility. You can also file for the tenders and all. Improved customer confidence in your product. Competitive advantage has to be there. What Qualitance India helps? How Qualitance India helps? We will do the gap analysis. We will coordinate to the BIS department. We will give you support over the testing and inspection. Documentation management will be there. And end-to-end support. Basically, our team is working last 15 years in the market to get the BIS license. So how there we go, and this is our detail.
You can check. This is our mobile number. You can call us, WhatsApp us. This is our email ID. You can post the inquiry to us. And thank you. This is the last slide from us. If you have any query related to the FMCS of the BIS FMCS, you can mail us or comment us, or basically this. And this is the video of us. If you have any query related to the BIS certification, how to get the BIS, you can mail us at qualitancindia@hotmail.com. And this is done. Thank you very much.